Right. Okay. So here we go. So namaskar to all, to the GBTC supported schools, Sagar Mitra, Pawan Mitra Abhiyan Teachers Training course. This fourth session is the last one of the basic training course. So what happens after basic training and so on, we are going to see, but let us complete for today. What we are going to do is Sagar Shuddhi. Last time we did Sagar Pradushan. So today we take a look at what is our action individually and collectively. And this is not a simple garbage collection program. There is a attitude which is to be kept inside while picking up the plastic at home. And there are a set of rules which are there. I had shown you 10 rules written in Marathi, which is the mother tongue in my state of Maharashtra. I have managed to compress those easily into 7 rules in English, which I am going to speak to you. Very shortly, I will be. By those 7 rules, the whole program, survives. It has managed to make good headway in the last 16 years. So today, 28th is, today's 28th. We will be completing Sagar Shuddhi. Sagar Shuddhi is what are we going to do about the polluted ocean? So I won't go through the dates. We did Sagar Mitra Prastavana, introduction, then Sagar Manthan, Sagar Pradushan, now Sagar Shuddhi. This set is the basic training course. In this, what we are going to do today is leadership orientation. For the school, how do we build a team? It's very simple. So we start with, our intention is that we take one division of, let us say 8th standard, you have 3 divisions, A, B, C. You take only one division, 8A, 8B, or 8C. Our suggestion, after our experiences, just take one division with anywhere between 20 to 50 students, depends on which kind of school is there. On an average, 40 students will be there. And try out this program on those 40 students for 3 months. Don't go for quantity. संख्यात्मक में ना जाए, गुणात्मक में जाए. Try to relate to every child regarding this, because we want a शतसंकल्पित program. एक भी मानव आत्मशिस्त से हटे नहीं, सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह में आए. सत्याग्रह यानी कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए सत्याग्रह करते हैं. सर्वाग्रह है, परिवर्तन होने के बाद सारे के सारे लोग उस मार्ग पे आ जाते. तो हम देखना चाहते हैं कि 3 महीने में हम 40 में से कितने बच्चों तक पहुंच सकते हैं. ये जरूरी नहीं 100% हो ही जाए, पर ये टेस्ट लेना चाहिए, खुद की कसौटी लेनी चाहिए कि एक क्लास पर फोकस करें और एक क्लास के पेरेंट्स पर. 40 बच्चे हैं तो 80 पेरेंट्स आर देयर. So how do we make headway when we make the problem very easy for ourselves? Okay. So let us listen to the Sarvagraha song, which says कि सत्याग्रह is not enough. All of us have to be in सत्याग्रह. अब सत्य का आग्रह क्या है कि सत्य यह है कि एक समंदर है. सत्य यह है कि समंदर में प्लास्टिक जाता है. सत्य यह है कि समंदर हमें 70% ऑक्सीजन देता है. तो सत्याग्रह क्या बनेगा कि मैं प्लास्टिक नहीं फेंकने वाला. पर अकेला सत्याग्रह करने से कोई मार्ग नहीं निकलेगा. 8 बिलियन लोगों को करना पड़ेगा. ये एक छोटे सॉन्ग में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए बना के रखा है. तो I will activate the sound, which I have not done. Yeah, share sound, and then go into this. All these songs are on YouTube. As a set, we will be giving you these songs also. चलो जगाए सब छात्रों को राज्य, राष्ट्र और शहर. उठो शहर, गांव और घर घर में अब सब परिवारों जाग उठो. सागर मित्रों के जल रक्षण की क्रांति का वचन सुनो. प्रदूषणकारी हाथ रोक कर जल रक्षण का कवच बुनो. सत्याग्रह के परे उभर कर
सर्वाग्र समृद्ध बनो, हर एक हाथ की मदद चाहिए, 100% सहयोग चाहिए, शत संकल्प से सिद्ध बनो, 100% कृतिबद्ध बनो। सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह का मार्ग चुनो, एक भी मानव आत्मशिस्त से हटे नहीं, संसिद्ध बनो। सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्र समृद्ध बनो। So I will only repeat one thing. After we complete the fourth session, the teachers and stakeholders who are here, they should focus on one class, one division of one class for 3 months, and try to see, can we do Shata Sankalpit? It may not happen every time. Okay. But our actual administrative aim is at least 30%. But that we should not say to the children. We should try for 100%, the way we say in my 8th standard A, all the students are going to pass and go to 9th. All of them, 100%. Now, studying the 8th standard syllabus and passing is a very, very big job. Collecting a little bit of plastic every month is a small job. So now our convincing capacity is on the line here. कसौटी है कि क्या ये छोटा सा काम हम 100% बच्चों के मन में, उनके हृदय में, उनके आत्मा में, उनके रूह में, उनके जहन में, उनके वजूद में, उनके वर्ल्ड व्यू में, उनके पैराडाइम में हम बिठा सकते हैं क्या? तो ये प्रयोग करना है। इवन फॉर अ मास्टर टीचर इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रयोग कि एक वर्ग का ही लेना है 3 महीने के लिए, और इसमें से जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ये 3 महीने के बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा इनफॉर्मल होता है जहाँ वी डोंट हैव एन एजेंडा, योर क्वेश्चंस आर द एजेंडा, वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, वट एवर, and that 1 hour, 1.5 hours, we take all your questions and we will try to design for you what now that you want to expand. Someone will say, I want to do the whole school. Someone will say, I want to do the whole district. We'll have different, यथाशक्ति हर एक व्यक्ति का अलग अलग आएगा। तो जहां जैसे खेत आता है वैसे डिजाइन करना पड़ता है कि एडवांस में क्या करना है। तो देर इज नो सच थिंग एज एडवांस कोर्स एक्चुअली, इट इज ओनली we will advance together, trying to see up to where we have come and up to where we can go, given the reality which is reported to us when we try 1-1-1-1 class. So I think that is a very sound, organic and modular way of growing, because human beings are not like bricks. We just can't keep them as though all of them will stay in place, you know. So we will have to give everyone the freedom, and the 3 months is a long time to work with 40 to 50 children. So this is very important to do. और ये गाना कहता है, सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह समृद्ध पद। सबसे बेहतरीन सर्वाग्रह, यानी सब लोग अच्छा काम करते हैं। ये काम केवल टीचर्स करते हैं मेरे पृथ्वी पर। आप सब टीचर्स को मेरा नमन है, आपके पैरों को छू के, क्योंकि you are the only professionals who are asked for 100% output. 100% of the children must pass and go to the next class. You know, this is an impossible thing. 100% of the children must show a same quality of getting some minimum knowledge and going to the next class. So really the quality control or the quality context for the teachers is the highest in the world. So the same context we have to apply to children. For getting marks, of course, they will study all 100 of them, all 50 of them, all 40 of them. But to save someone other than them, can we bring them to 100% is the question. Only the teachers will know the answer to this, because they know how to bring the children to 100% participation. What is the end result that we want from our children, for the future, for ourselves, for our surroundings? We want that regarding plastic waste, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन की शुरुआत है प्लास्टिक कचरा वर्गीकरण, प्लास्टिक कूड़ा या फेंकने लायक जो प्लास्टिक है उसका वर्गीकरण, सेग्रीगेटिंग इट, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द
garbage is the key to plastic waste management. And so what all of the Sagar Mitra program is the segregation of plastic at home. And for that segregation to be proper, we come to 7 rules of segregation. Now we will want eventually, whether it's Ayodhya or whether it is Bareilly and other places where Kathmandu, whether it's Zilla Parishad Prashasan or Shahar Prashasan या सब ग्राम पंचायत या महिला बचत गट या NGOs और स्वयं सेविक संस्था या हमारे लिए schools, because with the government we are ready to work with any of these layers. अयोध्या जिला शहर शाला, शाला इज इन मराठी, पाठशाला और महाविद्यालय. तो हम ये स्कूल्स को रेड में लिखे क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वी आर सिटिंग विद दोज हु वर्क विद स्कूल्स, जीटीबीसी. We will have to link with the state level or city level plastic recyclers. This is an important part which we don't speak about earlier, but today in our administrative vision, we have to look at who are the recyclers. तो इसमें अंतर्बाह्य संत, भीतर के संत ये वैल्यू एजुकेशन सिखाते हैं और बाहर के संत ये साइंस सिखाते हैं. तो अंतर्बाह्य जो संत है, भीतर का आयुर्वेद भी सिखाया ऋषि लोगों ने, और बाहर का जो बाहर की जो निसर्ग रचना है वो भी सिखाया. तो संत और ऋषि ये अंतर्बाह्य काम करते हैं. द वंस हु आर द इंटरनल वर्ल्ड के ऋषि आर द स्पिरिचुअल वंस, एंड द वंस हु टीच फॉर अबाउट द आउटर वर्ल्ड एंड द साइंस ऑफ इट आर द outer rishis. So antarbahya santa, फिर शासन, समाज और महाजन is those who are fortunate enough to have more than the others, whether it is knowledge, whether it is resources, whether it is money, whether it is contacts, whether it is political power, whether it is educational status, whether it is awards. Mahajan is those who are uniquely privileged through their actions or through their birth into being more powerful than others. They should be involved because they have the ability to give to others. सो एक तो प्लास्टिक कचरा वर्गीकरण, सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक हमें सीखना सिखाना है, और ये हम अब अभी जिला परिषद तक देख सकते हैं. वैसे तो हमें पूर्ण पृथ्वी पर करना है, पर हमारी जगह पे, हमारे स्कूल में, हमारे वर्ग में, हमारे एक एक बच्चे में हम ऐसा कुछ आदर्श निर्माण कर पाए कि हर महीने में ला रहा है बस 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 40 टुकड़े. पहले उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, जो लाएंगे वो ठीक है, उनके अभ्यास के लिए ला रहे. उनको कहना कि प्लास्टिक का अभ्यास है ये, तो प्लास्टिक का अभ्यास करने के लिए लाइए. This is to remind us why we are doing it. Because the helpless creatures are now at the mercy of this plastic. You see the cows eating. Amazing, so many photographs of monkeys eating plastic are coming up. And let me say that I am absolutely overjoyed that when we did the session with the 60 students, no, the special 60 students, आधे घंटे का सेशन किया. उसके बाद टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलके जो पोस्टर्स बनाए हैं, दोस पोस्टर्स आर जस्ट वंडरफुल. दे आर एन एडिशन टू सागर मित्र वर्क. एंड लिटरली टुडेज सब्जेक्ट कि हमें प्रदूषण करना है तो अनियंत्रित प्लास्टिक उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा, और हमें यदि शुद्धि करनी है तो जिम्मेदार उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य. यही आज का सब्जेक्ट हो गया. दिस पोस्टर विल बी यूज्ड ऑल ओवर इंडिया wherever Hindi is known. I think Santosh ji has created this poster. And I saw some comments about this poster that we can use it as it is. I have also written that comment. There were some questions about logo. So I will be sending our logo, because here a wonderful logo is created for Sagar Mitra here, but that is not our logo actually. So I will send to you our basic artwork of our logo into 3 types of files, TIFF file and whatever is needed. And whenever you feel you want to show out the partnership between us, because here I see that GBTC Trust and Sagar Mitra, that's just wonderful how the partnership can develop. You can use our authentic logo, and we can go on with this. These posters will be placed on our website, and those who have Hindi as their language of preference, they will use this along with the GBTC Trust logo. So all our schools, wherever they want, we will take your permission today. These are products of whatever we are doing together, and we will say we are going to put it on the internet, on the website, and then they can, whoever is there can download it, because we are not into intellectual property. We are into
open source knowledge for everybody. The faster it goes all over the world, the better. Let us not block it with some kind of barriers. So hats off to all who have created these kind of posters. There is one point I wanted to make here. Reduce, reuse, recycle is a triangle which we are aware of. In the middle of the triangle, we have to start writing recollect. See, recycling does not happen if recollection is not there. So there is a missing part which is there. All of us who have experienced asking children to collect plastic know that we ask them to recollect it. On our planet, only 10% is being recollected according to any norm, and only 10% is going for recycling. So recycling is dependent on a prior step, and the step is called as recollection. So reduce, reuse, recollect, and recycle. We don't have to, the triangle which we draw, recollect can be written inside. This is what we do. So just a suggestion. If the poster remains as it is just wonderful. Because we can very well do with reduce, reuse, and recycle. There will be so many variations. I just suggested a variation. The other part is with the help of the teachers or without the help of the teachers, students have used AI and their own creativity to create. I received 6 posters. I'm not going to go through each of them, but each of them is just brilliant. Only in one poster I had to just sort of correct one figure. It's 1.4 million tons is the pollution. 14 million tons is the pollution. By error, 14 tons was written over there. So this is the corrected one which says 14 million tons of plastic goes into the ocean. Each of these posters is excellent. Our own Sagar Mitra has never created a multiple choice question, never asked children to write their own stories. बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, उसमें सागर नाम का बच्चा था. This is just amazing for us, So these are products of our GBTC students and teachers doing some absolutely wonderful work. These are 3 more. So I just wanted to say that all these posters already talk about Sagar Shuddhi. And most of the rules out of the 7 rules, they already talk about it. So one of the results will be that if we work in Ayodhya, then every family will come into a pledge. So when we say we will take only one class for 3 months, then we will try to see, can we send this pledge to the parents on WhatsApp, or can we talk about this pledge in the PTA meeting? We, the people of each family of Ayodhya district, pledge to segregate our family waste plastic at home and to send it for recycling, to protect the Saryu and Ghagra rivers and river basins, and to protect the ocean forests. Never forget to complete this pledge up to the writing of ocean forests. नहीं तो सागर मित्र कहने में कोई अर्थ ही नहीं बनता. और ओशन फॉरेस्ट क्यों? तो ओशन के फॉरेस्ट 70% ऑक्सीजन देते हैं और प्लास्टिक से वो मर रहे हैं. We are destroying them with plastic. I am trying to merge Sagar Shuddhi today's talk with what we have done in the last 3 sessions. Briefly, I will refer to those. We know that the reason why we are doing this is to save these oceans. Because so much plastic has gone in. It's just a reminder of what we have already done several times. And we do need to remember to visualize the ocean greenery and to teach our children to visualize ocean greenery as microscopic, which can be seen under the microscope. हिंदी में हम ऐसे कहेंगे, ऊपर वाले ने ऐसा कुछ करिश्मा किया है कि समंदर की हरियाली देखनी है, समंदर की वनस्पति देखनी है तो बूंद में देखनी पड़ती है. देखो, सागर की वनस्पति देखनी है तो बूंद में देखनी पड़ती है. तो एक बूंद में 50,000 पेड़ होते हैं. That is the average on the planet, okay? If you go to very cold region, you will find almost none. Because vanaspati requires heat, humidity and heat. That is why we have tropical forests, equatorial forests. So wherever there is heat and sunlight, you will find more than 50,000 trees inside every drop. And wherever it's very cold near the poles, you will find lesser vanaspati. But the average is coming to, in the surface area of almost up to 20 feet where the sunlight goes down, every drop will have 50,000
Now that means every drop is like a leaf, and every ocean wave is like a leaf, creating oxygen for us. So please remember this visualization when you are teaching, and make sure that the children should in 1 or 2 years realize that they are saving this forest from this plastic. This is part of what we already did, but the context today is there are some visualizations we want to be embedded into the child. And the work of the teacher is to embed some things into the child's consciousness so that for the rest of life, whenever the child thinks, they will think about these things as part and parcel of their samskara. This is not an education program, but a samskara program. Please make sure they understand that humanity is preventing the sunlight from reaching the greenery in the ocean, and the ocean greenery is in minor particles, small particles. Now, this is amongst the last of the reminders from what we have done in the last 3 sessions. Do show them what is the Sankhyaत्मक dimensions of plastic in the ocean. You may remember I have said the total area of the ocean is 360 million square kilometers, and the total area of plastic pollution is 120 million square kilometers. And if we take all the plastic, you can see the plastic, it is shown in the different colors. आपको नीचे का बार जो दिख रहा है उसमें जो रंग है वो जो रंग दिख रहे हैं आपको सागर में व्हाइट छोड़ के, leaving the white part, the rest of it is plastic polluted. Okay, so we must be able to bring before the children the gravity of having polluted 1/3 of the ocean already. 120 million square kilometers polluted by ocean polluted by plastic. If we lift that plastic from the ocean and throw it on our 66,000 rivers, every river will get polluted 120 times. That is the amount of plastic we have thrown. So this must reach the child. The primary reason why the child brings plastic to school should be, I want to save the ocean, should be that. Also give them a clear idea of how long the plastic lasts. And the plastic changes to nanoparticles, and nanoparticles remain plastic. उसकी मिट्टी नहीं होती, मिट्टी नहीं होती प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक ही रहता है. और जब उसके नैनो पार्टिकल होता है तो वो ज्यादा घातक है. So together we throw too much, and now we are into the action part. What should happen in the house? You have heard this, but we will hear this song now. The parents will say, what is this program that you have got? And the children will say that this is our homework, and we want to protect the oceans, and we want to bring global cooling. Daddy said, I am busy. Mommy said, I am busy. Beta said, give me time to choose a plastic bag. Betty said, here my brother, take this plastic bag. Daddy asked, what is this? Mommy asked, what is this? Betty said, Sagarmita, the oceans we are protecting. Beta said, yes we are, plastic waste collecting. Daddy asked, why clean oceans? Mommy frowned, clean your rooms. Beta said, rooms we cleaned, now I save the fish. Betty said, saving trees for a global cooling wish. Beta said, it's our homework. Betty said, we will not shirk. Daddy said, do your homework, what a good girl you are. Mommy said, do your studies, my good boy, you are my star. Literally, we teach our children in class that when their parents ask them, what is this, what are you doing? They must mention that we are saving the ocean, the fish in the ocean, the greenery in the ocean, and we are doing this for global cooling because the ocean cools the planet. So a possible conversation in every house is given before you. So these movies
These small clips, videos are there on YouTube, and all the URLs will be sent to you. This is in Marathi. The reason why I'm showing you in Marathi is we will soon be making this in Hindi. So I want you to listen to the Marathi because we get an idea of, we can keep the same kind of mindset, and the value of this for children remains the same, whatever the language. बाबा म्हणतात मला नाही वेळ, आई म्हणते हा कसला खेळ, बेटा म्हणतो आई ग पिसवी देना, बेटी म्हणते प्लास्टिक पिसवी देना, पप्पांचा प्रश्न कशाला पिसवी, आई म्हणते घे ही पिसवी, बेटा म्हणतो सागर मित्र समुद्र वाचवणार, बेटी म्हणते आई ग टाकाऊ प्लास्टिक जमा करणार. बाबा म्हणाले का करू साफ, आई म्हणाली खोली केली का साफ, बेटा म्हणाला खोली साफ केली आता मासे वाचवणार, बेटी म्हणाली गरमी वाढली ग आता झाडे वाचवणार, बेटा म्हणाला आई हा गृहपाठ, बेटी म्हणाली बाबा हा गृहपाठ, बाबा म्हणाले झाडे वाचव ग शहाणी माझी बाळ, आई म्हणाली सागर वाचव रे शहाणा माझा बाळ, बाबा म्हणाले शबास मुलांनो असाच करा अभ्यास, माऊली म्हणाली जो जे वांछील तो तेला होत्यास. The idea was to say that we will have this eventually in all the languages. Now, when we work in the schools, it eventually goes to the administration. I think that will happen in its own time in Ayodhya and Kathmandu. We don't have to start with going to the administration. This is a glimpse of what we showed you earlier. That in place like Nashik, after working through 30 schools, we are now going to go there for 300 schools. And in the interim, we completed 200. So totally the schools will be 530, which means 2 teachers per school. We will eventually make sure that in every school there are 2 teachers, because if one is absent, the other one can handle it. So these are the online sessions where you will find 2 pages. So this was when 30 people were attending the Nashik sessions. So this is just to show you that if we do it in one school, then we can, yatha shakti, we can go for any number. What is the problem? But first we must absorb that in the family, has the discussion moved to the ocean, or it's just about plastic उठाने को बोला है स्कूल में और नया काम दे दिया है, चलो प्लास्टिक उठाते हैं. Are they doing it reluctantly? Are they doing it happily? Are they understanding that this is part of a planned global movement in the future? And are they understanding how many children are doing it? So as a teacher over the year, as the children bring the plastic, we can gradually make them aware so that they become our ambassadors. And I was completely floored by the 60 children, the representatives of that 60 children group. And the way in which the posters have come up is fantastic. It gives me the hope that GBTC जैसे जो कोई दुनिया में बच्चों के बारे में बहुत प्यार है, दूसरा क्या करते हैं हम बड़े बड़े लोग, बच्चों के लिए तो करते हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, वो हमारे शरीर के, दिल के, मन के टुकड़े हैं, हमारी आत्मा के टुकड़े हैं, रूह, they are part of our entire atma only. So the human beings teach the children and take care of them to such an extent. We got a great example from the way the posters were created by the children. The depth to which the children were reached is something amazing, that they could reproduce it. So I think it is not a very tall ask that whatever we showed in the singing, that can happen in the house. We have to pay a little attention because our children are our prince and princess. Yes, always make sure that they keep seeing visuals of the ocean in the greenery in the ocean. Always make sure. And now we have to save these creatures, and that is why we do Sagar Shuddhi. This was summarizing whatever has happened till now.
Most important rule for children's safety, never collect waste plastic from outside one's house. जैसे कागज के रद्दी का नियम है ना, कि बेटा बेटी को हम कहते हैं कि घर में जो न्यूज़पेपर आया है वो पुराना हो गया तो रखो, गीला न्यूज़पेपर है तो नहीं रखना, उसके ऊपर मिट्टी लगी है तो नहीं रखना, क्योंकि कबाड़ी वाला नहीं लेगा वो न्यूज़पेपर। तो क्लीन ड्राई एंड एम्प्टी न्यूज़पेपर हर महीना रखते हैं, उसके लिए जगह भी करते हैं। सो ये घर का ही न्यूज़पेपर होता है। कोई भी पेरेंट दुनिया में नहीं कहता कि घर आते वक्त रास्ते पर न्यूज़पेपर मिला तो उसको उठा के लाओ, ऐसा कोई कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। सो पेरेंट्स को प्लास्टिक रद्दी ये बताना चाहिए कि ये कागज के रद्दी जैसा काम है, घर में करेंगे, कोई चिंता ना करो, ये बाहर का नहीं उठा रहे, क्योंकि पेरेंट्स को ये चिंता रहती। और टीचर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वी आर नॉट आफ्टर नंबर एंड अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, वी आर नॉट बिकमिंग द लेबर फॉर द डिस्ट्रिक्ट और द सिटी government. These children are not the labor that they will go all over the city and pick up plastic. That is not the purpose of the children. The children will understand plastic and understand the ocean, and they will do just enough to do their gruha patha. उनका होमवर्क है ताकि ये दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ग्लोबल कूलिंग बाय द ओशन, और पर्पज है प्लास्टिक के माध्यम से वो ग्लोबल कूलिंग तक आ जाए, और वो सारा इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स और एथिक्स का जो विषय है, इकोलॉजी का है, इकोनॉमी का है और एथिक्स का विषय है, ये उनके पूरे टीचिंग में और लर्निंग में आ जाए. So the first rule is very important. They collect only from home. The other rule is they will collect for अहिंसा. कचरा निकालने के लिए ये कारण हमने नहीं बोलना है, और उनके भीतर वो कैसे एम्बेड होता है वो देखना है. एक साल में समझो 5वीं के वर्ग के 2 ही बच्चों को समझ गया अहिंसा क्या है. 6th स्टैंडर्ड में सुना देंगे, 7th में सीख जाएंगे, 8th में सीख जाएंगे. कोई कोई जल्दबाजी नहीं है. They are children. Older people have not learnt how to keep plastic and how it is for ahimsa. So let us take our time and give the children time. We will also give the children the knowledge that let them not worry about how the world is going to change. They have to, while they go from 5th to 9th standard, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 5 साल, they have to change only the people at home. घर के लोगों को प्लास्टिक के रद्दी के सिस्टम में लाओ. 5 साल दिए हैं 3-4 लोगों को बदलने के लिए. तो give a very easy task to the child, which is quantitatively easy, but qualitatively it must be very particular. A quantitatively easy task, but qualitatively very particular. So the very particular thing is quantity only what is at home they have to collect. So it's a small quantity, it's easy to do. But qualitatively, now we will go into the rules. The first rule is the quality of the plastic is only the plastic at home. So here are the rules. The 7 rules of Sagar Shuddhi. We have condensed 10 to 7 because the lesser the rules and the more clear the better. बहुत बड़ा हमें उसका टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है. Caution. Do not teach Sagar Mitra to 1st to 4th standard students. Because if the children are coming to school in a rickshaw, if they see a plastic bottle on the ground, some child 1st to 4th standard छोटे बच्चे वो रिक्शा में से कूद के प्लास्टिक उठाने की कोशिश करे, और हमारे राजकुमार राजकुमारी को एक आधा ट्रक लग गया तो हम क्या करें भाई? हमारे मुख से कोई शब्द ही नहीं आएगा. तो ये छोटे बच्चे, उनको जब खिलौने देते हैं प्लास्टिक के तो उस पर वार्निंग रहती है, नॉट फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years. व्हाई? स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लास्टिक आर देयर इन इट. वार्निंग इज देयर ऑन द टॉयज ऑल्सो, नॉट फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years or 6 years. So we will have to make sure when they are going to collect plastic, they may collect small pieces of plastic, sharp pieces of plastic. They might try to break a plastic with a hammer, because बच्चों को कुछ समझता नहीं है 1ली से 4th तक. तो do not teach Sagar Mitra to 1st to 4th standard students. उनको नॉलेज करके सिखाओ, पर उनको प्लास्टिक, that they should bring plastic should not be their mandate, is what is our experience. 2. Keep a Sagar Seva plastic waste collection bag at home. They can call it whatever, a bag at home, and collect only clean, dry and empty waste plastic in it. 3. Collect in this bag the waste plastic which is inside your home and not from outside your home. This is your homework. ये अभी बच्चे के लिए नियम है. This is your homework and it is not a garbage collection contract. Please be extremely clear. ये राजकुमार राजकुमारी है, वो केवल घर का खाली, सूखा
और स्वच्छ, तो खाली, सूखा और साफ प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे। क्लीन, साफ, सूखा, ड्राई और खाली, उसमें दूसरी चीज नहीं चाहिए। Fourth rule, we will be giving you this entire video also, so you will have all these rules with you, and we will be sharing the PowerPoints with you and this set of rules also. The fourth rule, you must not collect anything other than clean, dry, empty plastic in the bag. So do not put any wood, any metal, any glass, any food, any liquids and wet waste in the bag. कोई चटनी, तेल, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। तो other than plastic, nothing else. Fifth rule, collect your family's clean, dry, empty waste plastic in the bag for 1 month. Because if you ask them to do weekly, then the school will have a weekly headache. वो सारा प्लास्टिक हर हफ्ते आएगा, वो कौन हैंडल करेगा? महीने में एक बार काफी है। ओके, द अदर पार्ट इज, जब तक एक परिवार, माताजी, पिताजी और उनके बच्चे 1 महीने के लिए प्लास्टिक नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे कॉम्पिटिटिव कंज्यूमरिज्म एंड ऑर्नामेंटल कंज्यूमरिज्म, हमारी भोग संस्कृति में हम कितना प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। एक घर में एक गोनी भर गई तो उनको ध्यान में आता है, अरे आई एम बाइंग टू मच प्लास्टिक। तो महीने में कितना आता है ये समझना चाहिए उनको, अनुभव से, केवल आंखों से नहीं, केवल बातों से नहीं कि हम लोगों ने रोज उठाया और रोज दे दिया। तो महीने में कितना किया भाई, मेरे घर ने कितना पोल्यूशन किया, तो मेरे घर के मेंबर्स ने कितना पोल्यूशन रोका, ये विजुअली हाथों से समझना चाहिए। बिकॉज ह्यूमन बींग्स लर्न विद टैक्टाइल, हाथों से पकड़ते हैं तो ही उनको समझ में आता। तो जैसे कागज की रद्दी कितनी है इसका अंदाजा है हमें, महीने में कितनी आती है, तो वैसे प्लास्टिक की रद्दी कितनी आती है इसका अंदाजा होना चाहिए। और प्लास्टिक की रद्दी बढ़नी नहीं चाहिए। कागज की रद्दी कहाँ बढ़ती है? हम 3 न्यूज़पेपर 2 न्यूज़पेपर लेते तो उतनी ही रहती है वो कागज की रद्दी। तो वैसे ही प्लास्टिक की रद्दी बढ़नी नहीं चाहिए, हो सके तो कम होनी चाहिए। तो ये अंदाजा जो है ये केवल महीने का कितना होता है, ये 12 महीने समझना चाहिए मेरा महीने में कितना इकट्ठा होता है। तो collect your family's clean, dry, empty waste plastic in the bag for 1 month. Then you will know how much your family uses each month and will reduce the use. Now suddenly if a Earth Day comes, don't ask them to bring the plastic on Earth Day. Don't change the monthly cycle. Let it not be on the basis of something external. Let it be their संस्कार. अर्थ डे हो या ना हो, कोई चीफ गेस्ट जो बहुत बड़ा है पर्यावरण में, वो आए या ना आए, उनका महीने में जैसे कागज की रद्दी इकट्ठा होती है, कबाड़ी वाले के पास जाती है, इट हैज टू बी अ रूटीन संस्कार। रूटीन संस्कार, ऐसे नहीं कि फेस्टिवल है क्लेनलीनेस का तो आज करेंगे, तो ये रूटीन संस्कार होना चाहिए। जैसे पढ़ाई का लेसन रूटीनली होते रहता है, 2 लेसन इन मराठी, इन हिंदी एवरी डे, सो 2 लेसन इन हिंदी एवरी डे, रूटीन बिठाना है महीने का। Don't disturb the routine. In the 1 month waste plastic collection bag, there should be no food particles, no oil, no chutney, no sauce. There should be no smell. There should be no ants or cockroaches. This is very important. Because when the plastic is collected by the recycler may reject it saying, there are ants and cockroaches in it, this means you are putting food particles in. His machine cannot deal with that. The recycler needs only and only plastic. तो जैसे मैंने कहा 10 टुकड़े लाए तो चल जाएगा, पर वो इस नियम अनुसार चाहिए। पहले बच्चों को ऐसे कहने की जरूरत नहीं कि सारा का सारा प्लास्टिक उठाओ, शुरू कर दो। 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th में आने तक सीख जाएंगे कैसे करना है। The 7th and last rule in this, every month bring the Sagar Seva plastic collection bag to school. You can call it Sagar Mitra, Sagar Seva, whatever. Every month bring the Sagar Seva plastic collection bag to school on the date your teachers tell you. These are the instructions for the child which must be also conveyed on WhatsApp to the parents after the children are taught. How to handle the PTA meeting, how to explain this, that as teachers you will be able to do it. If you have any difficulty, you can always come to our Tuesday meetings and ask us. If you have success, please come to Tuesday meeting and share with us. If you feel one more rule is necessary in this, please share with us. We are into co-creative mode with you now.
We are not into a teaching mode today. Our teaching mode is over. We are into a co-creative mode because we have already created posters which are brilliant. Please inform the children and parents every 10 kilograms that the school team recollects for recycling saves 1 square kilometer of ocean surface from pollution. ये 10 किलो का यदि छोटे टुकड़े हो जाए ना, माइक्रो पार्टिकल्स जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, माइक्रो प्लास्टिक यानी 1 mm to 3 mm pieces, small pieces of plastic. If you take 10 kgs of plastic and break it into these small pieces and you throw it on a 1 square kilometer lake, because of the wind and the waves, the plastic will spread to the whole surface of 1 square kilometer. So each 10 kg that the school team collects, एक 10 किलो यानी कितना है? करीब 4 से 5 गोनी भर के. जो एडल्ट खड़ा रहे तो उसके हिप्स तक जो सैक आता है ना, गोनी जिसको कहते हैं, फॉर द चिल्ड्रन इट विल कम अप टू ऑलमोस्ट देयर शोल्डर्स. सो वो जो सैक रहता है, so every sack will collect about 2 to 2.5 kgs only. Plastic is a very light material. So every 10 kilograms that the school team collects, it saves 1 square kilometer of ocean from pollution. That's a very big contribution by the child. So we have already introduced to you that through Sagar Mitra, Pawan Mitra, we have been doing what we are now asking you to do. Sagar Shuddhi कैसे करते हैं, इसके डिटेल में जा रहे. 7 rules हो गए. तो ये रूल्स फॉलो करके ये बच्चों ने देखो इनका कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 गोनी भर के आया. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 kilos. That means these Sagar Mitra children, now these are representative children. The whole school doesn't wait there. The whole school, whatever they brought 5th to 9th standard, और ये primary रहेंगे तो 5th to 7th standard, they have managed to bring 10 kilos in the month. And that 10 kilos would have spoiled 1 square kilometer of water body, either the lake or the river or the ocean. But eventually it all goes to the ocean. So Sagar Mitra, Pawan Mitra model is a good model to follow. It has given us 400,000 volunteers have passed through our training program from 2011 onwards. Then 1,120 tons is recycled. We are in 2 states and we are hoping to get into more states now. So to celebrate a song which you already know, I'm going to play it. This summarizes what the children do. स्वच्छता के लिए, यानी सागर शुद्धि के लिए क्या करते हैं. सागर बच गया, सागर बच गया, बच्चों ने उसे बचाया. मछली खुश है, मछली खुश है, सबने प्लास्टिक उठाया. आप भी उठाओ, हम भी उठाओ, उठ गया प्रदूषण साया. बालक बदला, पालक बदले, बच्चों ने सिखाया. बालक बदला, पालक बदले, बच्चों ने सिखाया. सागर बच गया, सागर बच गया, बच्चों ने उसे बचाया. We also want the children to never forget the ocean. So permit me to go into this song also. रब की करुणा समरण करे, रब का पानी जतन करे, रब की इबादत सागर रक्षण
खुद से कोशिश शुरू करे। सागर मित्र खड़े रहे, सागर मित्र आगे बढ़े। सागर मित्र खड़े रहे, सागर मित्र आगे बढ़े। चलो अनंत का भजन करे, चलो सागर का स्मरण करे। व्यापक सागर मैत्री है तू, जल शुद्धि का कर्म करे। सागर मित्र खड़े रहे, सागर मित्र आगे बढ़े। सागर मित्र खड़े रहे, सागर मित्र आगे बढ़े। जो 7 रूल्स हमने बताए वो था कि फिजिकली ये सागर योग इसको यदि कहेंगे हम लोग योग शास्त्र में से, ये सागर योग के जो साधक बनते हैं बच्चे, उनका शरीर का आसन कैसे चाहिए। महीने में एक बार प्लास्टिक लाए गए, शरीर कैसे बिठाना है और ये मन और हृदय कैसे बिठाना है, ये सॉन्ग्स में है। वो केवल ऐसे उठा के एक संख्या में 5 टुकड़े बोले 50 टुकड़े बोले तो मैंने उठा के लाया, ऐसे मन की बात न रहे, वो हृदय तक चला जाए। तो हमारे कविता से और हमारी इन रचनाओं से ये शरीर का आसन क्या है और मन का आसन क्या चाहिए, और भावनाओं का आसन भी होता है, मन का भी एक आसन होता है, भावना का भी एक आसन होता है, और अकेले का एक आसन होता है, और सब मिलके एक आसन होता है। तो आवर हेड एंड आवर हार्ट्स एंड आवर हैंड्स, these have to be arranged in a particular way. So very few people talk about the how do we arrange our heart. So we say the ocean of compassion has to be, सारे आसन ओशन ऑफ कंपैशन के करने हैं। तो ये द सॉन्ग्स आर देयर टू शो दैट आसन केवल शरीर का है, जो सोचते हैं उनकी योग की शुरुआत भी नहीं हो। मन का भी आसन होता है, एक भावना का आसन होता है सबसे महत्व का। तो भावना क्या होनी चाहिए, रब की इबादत सागर रक्षण, दिस इज हाउ आई वर्शिप गॉड। बाकी करे या न करे, खुद से कोशिश शुरू करे, फिर ही सागर मित्र खड़ा रहेगा, नहीं तो प्लास्टिक उठाने वाला कामगार बन जाएगा। सागर मित्र का कोई एक वजन है, कोई एक उसका वजूद है, उसकी कुछ ग्रेविटी है। व्यापक सागर मैत्री हेतु जल शुद्धि का कर्म करे। अनंत का भजन करते करते सागर का स्मरण करना है और मछली का स्मरण करना है, क्योंकि रब की करुणा है तो हमारे भीतर भी कुछ करुणा हो मछली के लिए। तो ये गाने जरूरी है, क्योंकि अनलेस देयर इज अ कल्चरल रेनेसांस, अनलेस देयर इज अ कल्चरल अवेकनिंग, अनलेस देयर इज अ कल्चरल अवेकनिंग माहौल, millions of people don't come in, then it becomes intellectual discussion. The last part is for the teachers. Please remember the 3 oceans. I'm not going into go into the details here. करुणा सागर ये हमारा भीतर का सागर, इसके भीतर हम रखते हैं बाहर का क्षार सागर, सॉल्ट वाटर ओशन, विच इज इन डेंजर। संकट में सागर है वो बड़ा वाला, छोटे बच्चों के भीतर उससे भी बड़ा करुणा सागर है, वो करुणा सागर में बैठते। Who empowers the Karuna Sagar? The energy comes from the universe. So Kshira Sagar, which is the universe which has infinite energy, sends the energy of Karuna to the child, and the Karuna Sagar is so large that the child can take in the ocean completely. So this spiritual part also, please try to somehow remember it. To make sure that you remember, we will later we go into one song about this. But now we come to the actual things that they are doing according to the 7 rules. They take a bag, स्वच्छ, that means साफ, खाली
or सूखा. This is one bag only. The quantity is very less, but the rule is very, very clear. It has to be clean, it has to be dry, and it has to be empty from inside and outside. And never to collect this from outside one's home, always from inside. You will see the entire program is given in 2 lines here. Bring clean, dry, and empty waste plastic from home to school every month to prevent the fish and birds from dying by choking or strangling on plastic. All this kind of plastic will be okay. Please tell the children, don't try to force a large piece of plastic into your bag. आपके बैग में जितना बैठेगा उतना लाओ. बच्चे हैं वो, उनके बैग में जितना बैठेगा उतना लाए. वो कहेंगे बड़ा एक टाकी है, तो कहेंगे वो पेरेंट्स देख लेंगे. बेटा आप अभी छात्र हो, राजकुमार राजकुमारी हो, अभी छोटा वाला प्लास्टिक पे अभ्यास कर लो. तो उनको अक्सर कहना कि ये काम नहीं है, ये अभ्यास है. तो जो आपके बैग में बैठता है उतना ही प्लास्टिक लाना है. The newspaper example you must give them. These slide shows will be there with you. You can use them. घर के साफ सूखे और खाली फेंकने लायक प्लास्टिक को अलग रखो, और ये ऐसे रखना है. Just for your information, we have Captain Bodankar with us, Captain Ullas. This is from his house. It is a photograph he sent us, and he said this must be included. So it's one of the most important slides actually. So this is how it will look at home. Preferably, they should label it waste paper raddi and waste plastic raddi. You saw the song. That song deals with this. How do they convince the parents about it? The parents say, what is this new work that you have started? And the children should be able to say, we are doing this to save the ocean, to save the fish, to save the plants, to save the birds. And they must also be able to convince their parents, we are not picking up from outside the house, papa, mama. It is not dangerous. We'll pick up in the house. You can supervise us. So it's a very easy program which can be done. Very safe for the children. But we should be able to teach them the rules. Please make sure they don't pick up from outside the house. I can repeat that 100 times also. तो ये फिर स्कूल में लाते हैं. स्कूल में ऐसे फोटोग्राफ के लिए बैठे, ऐसे बैठते नहीं कभी, नहीं तो it will be a mess up, you know. They come into the school gate and they are given one spot where they leave the bag and then they come for assembly prayers. They must become separate from their bags before their assembly and prayer. They will not take these bags into the classroom. So in one corner of the school, there is a pile of that. During rainy season, you'll have to give them an indoor place, somewhere under a staircase or some in the parking lot. That jugaad is for every teacher and every administration to manage, because there are so many different types of architectures. So they will bring once in a month. घरात जमा केलेले टाकाऊ प्लास्टिक महिन्यातून एकदा शाळेत आणा. दिस इज इन मराठी. ब्रिंग टू स्कूल वंस अ मंथ द वेस्ट प्लास्टिक गैदर्ड एट होम. घर में इकट्ठा किया हुआ फेंकने लायक प्लास्टिक महीने में एक बार स्कूल लाए. फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, नेवर कलेक्ट वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम आउटसाइड वंस होम. Safety of our Rajkumar Rajkumari is paramount. We can stop Sagar Mitra if we want, but the children should not ever get hurt. That is more important than anything else on this planet. This is one of the schools where you can see there are nearly 1,500 students, so large amount of plastic comes in. एक करीब 25 किलो तो आ जाता है, तो 2.5 square kilometers का pollution हो जाता था इससे. So this is the Sagar Shuddhi. वेरी सिंपल. तो ये सक्सेसफुल अहिंसा प्रोग्राम है. ये केवल कचरा उठाने का नहीं है. बच्चों को हम कह सकते, दिस वाज 125 kilos. I was there taking this photograph in 2013, that is 13 years ago. No vegetation will die because of this plastic. No plankton will die, no fish will die, no birds will die, no animals will die. They cannot be hurt by this recovered, recollected plastic. Recollected plastic goes for recycling. Reduce, reuse, recollect and recycle. Reduce, reuse, recollect and recycle. This is how it looks. सागर शुद्धि का मतलब है कि जो विष है उसको हमने अलग कर दिया और उसकी वस्तु बना दी तो उसका अमृत बन गया. तो ये क्वांटिटीज बनते जाती है. डोंट गेट स्टक विथ हाउ मच कम्स इन. बी वेरी पर्टिकुलर दैट आर ऑल द चिल्ड्रन डूइंग इट, आर दे ब्रिंगिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्लास्टिक एट लीस्ट. बट विदाउट गोइंग फॉर अ संख्यात्मक target, because without going for a target in terms of kilos and tons, because the children are large in number, it starts coming in. Don't be in a hurry for very large results.
The results are large where children, all the children are taught. So these are results which I have shown earlier. Now comes the most important part for us as administrators. I think we'll discuss about this later. Let me complete this slide. Do not ask children to recollect waste plastic and bring to school each month till you can arrange the transport of the waste plastic from the school to the authorized recycler. This is 90% of the program. 10% हम बच्चों को तो बोल देंगे, वो प्लास्टिक लाएंगे, फिर उसको लेके क्या करे, कौन लेके जाएगा प्लास्टिक? ये तो 90% प्रोग्राम तो हमारे ऊपर है, वो बच्चों के ऊपर नहीं है कि इसके लिए व्हीकल चाहिए, व्हीकल का खर्चा गवर्नमेंट देगा क्या, कोई एनजीओ देगा क्या? सो ऑल दिस विल वन कबड्डी वाला कम एंड टेक इट. Suppose he takes it for 1 month and then he says the plastic is too less, only 10 kilos. My recycling requires 2 tons. तो ये स्कूल में से मैं मेरा व्हीकल बेचता हूँ तो मेरा डीजल खर्चा हो रहा है, पर मुझे उतना प्लास्टिक नहीं मिल रहा. So who is going to do the transport? So these are problems which come up and get sorted out over the first 1 or 2 years of implementing. So in Ambezogai we are implementing, there the government is sending the vehicle. We are implementing in Jalgaon, there the Red Cross is sending their old ambulance. Depends on the place and the people who are involved. The vehicle gets managed and the monthly collection gets managed. Please, this is the most important administrative thing. How can we ask the children to collect when what they bring, we don't know what to do with it? So till we can arrange the transport of the waste plastic from the school to the authorized recycler or to the government recycling center. You have to ask where that is, or if there is. So in that, on Tuesday, you can come to discuss with us the particular things of Kathmandu, the particular things of Bareilly, the particular things of Ayodhya, and we will, through our experience, we will try to help you out in how to arrange it. We can help you to search for local recyclers because we are in contact with the All India Recyclers Association. But from this distance, our headquarters is in Pune, we cannot commit to send a vehicle from here. We don't start a branch there. We cannot commit to send a vehicle. So whoever implements the program has to grapple with this first before we give the permission to our teachers कि जाके आप सिखाना शुरू करो. If we, that will be the local and regional implementing institutions' responsibility. This is the most important slide of today. सही में एक स्लाइड तो आपको अभी पता है कि बच्चों को 1st to 4th को इसमें नहीं लेते और घर के बाहर का प्लास्टिक नहीं उठाते. उतने ही इम्पोर्टेंस का ये है कि बच्चे कंप्लीटली डिमोरलाइज हो जाएंगे यदि ये प्लास्टिक कोई उठा के लेके नहीं जाता. तो हमारा जिम्मा है कि उन्होंने जो कष्ट करके लाया है उसकी अगली चेन जो है वो हमें बना के रखनी है पहले एडवांस में. तो इसके बारे में हम प्रश्न ले सकते हैं और एक सेशन में नहीं होता ये. आप ट्यूसडे को हम लोगों ने हेल्पलाइन इसलिए रखा है कि ऑनगोइंग वी आर विथ यू थ्रू आउट ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स फॉर हाउएवर मेनी ईयर्स यू डू इट. Our primary contact with you will be Captain Bodhankar. Recently, we did it for Akola district and Akola city. There, the primary contact is Vishal Sonkul. Here, the primary contact with you because he sort of was in contact with you early. Our primary contact will be him, and we are all available 24 hours also. Our numbers will also be given to you. But we prefer if there is a one-point contact, so everything stays in a clear vision of administratively what is happening exactly. The rules of 7, the 7 rules are repeated here. I'm not going to read them, but for new people, you have to go through these rules. Please make a printout and put it on your whiteboard and take a look at these rules properly as you are going to involve children in this. Okay. So these are the 7 rules repeated here for importance of those rules. This happens if we transport the plastic to the recycler. So this is not our domain, this is to answer the question of the children. What happens to the plastic? So ये हमारे सागर शुद्धि के परे चला गया. हम लोगों ने प्लास्टिक उठा के लाया, उसका क्या होता है? तो उसका सॉर्टिंग होता है, उसका श्रेडिंग होता है, उसका हीटिंग होता है, मेल्टिंग होता है, फिर मेल्ट होने के बाद वो आटे के जैसा बनता है, फिर उसको शेप दिया जाता है. यहाँ आप देख रहे हैं उसके स्टिक्स बन रहे हैं, फिर वो स्टिक्स को बंच करके उसको तोड़ा जाता है, सारा मशीन में होता है. तो ये स्टिक्स को बंच करके जब तोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स. If you take a look at an individual granule, you will see it is a cylindrical cross section of a stick.
The stick comes out as a cylinder. तो ये छोटे 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 सिलेंडर्स है, वो राउंड है और फ्लैट है दो एंड्स पे. So why does Sagar Shuddhi happen? We recollect the plastic and send it to recycler. In the first phase, it is created into granules. फिर उसका बकेट बनता है, कुर्सी बनती है, गार्डन पॉट बन सकता है, बॉटल बनता है, फाइबर बनता है. दैट इज द, वी से दैट सर्कुलर इकोनॉमी में हमारा प्लास्टिक चला जाता है. और यदि ज्यादा प्लास्टिक जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी में तो जॉब्स भी बढ़ जाते हैं. कैन यू इमेजिन if everyone starts bringing plastic, on every corner there can be a plastic लेने वाला दुकानदार. For small shops it can become a fantastic opportunity. It is a billions of dollars का इंडस्ट्री है. पर पहले इकट्ठा तो होना चाहिए. कागज की रद्दी इकट्ठा होती है इसलिए बहुत बड़ा बिजनेस है वो. तो there are millions of young people who are getting a job there. Millions. So plastic is also a fantastic job opportunity for India, where poor people will get the job. The most important part, poor people will get a job working with clean plastic. So this is the total program. जब ये प्लास्टिक रीयूज में आता है तो समंदर में नहीं जाता, इसलिए हम कहते हैं कि लुक, हम लोगों ने सागर की शुद्धि कर दी. तो some places they don't make granules, but they make boards like this. I've shown you the board, you know. They make boards like this. You can see the pieces of plastic in that. On the edge also you will see a lot of plastic is there. You see this. And on that we are creating this educational posters, so that the school is given back this recycled plastic. This took us many years to develop. We did not get this in 1 year directly, but we did start sending the plastic for recycling. So recycling के अलग अलग प्रकार हैं. देखो ये वाला जो है, इसमें से जो प्लास्टिक का ये लिक्विड बन जाता है डीजल के जैसे. Literally, if you are here, I would open this bottle and you would smell petrol only. So plastic is changed, but first we have to recollect it according to the 7 rules. According to the 7 rules, we have to recollect it. And the other rule for us is we have to arrange the transport, and which is the recycler. Or we have to arrange something with the government which has a solid waste department. The domain of basic course trained Sagar Mitra teachers. Take one class for 3 months, standard 8 division B for instance, example. Visit our Tuesday fellowship to ask questions about details of teaching and implementation. Seek a structured and documented result in one class for 3 months. So very clear domain is given, very clear domain. Raju, as the go-between between our headquarters and this group, I think somewhere you may have to keep a more frequent contact with them. Okay, Captain. So when when we did this program in Davangere, you see the trained teachers, there are at least 2 trained teachers in every school. So the result is there, plastic coming in, and this is there, the government is picking it up. You see this vehicle comes in and they are getting clean plastic, not dirty plastic. The vehicle, government vehicle is coming. We never know what will be the system in your place, you know, we have to explore it. There it was started by the district collector, so he just gave a written order to the corporation, keep a 1 vehicle for this plastic. Then if the plastic increases, then keep 2 vehicles, then keep 3 vehicles. There can be a fleet of vehicles. And we have suggested to them who are the recyclers, and they are sending it to those recyclers. Now, only for a few seconds I will show this. This is the result which will be there. सागर शुद्धि का काम शुरू हो जाएगा. So now we are into our administrative notes for today. Session 4, we are at the ending. So particularly important for me to be talking also with Captain when I'm doing this. Sagar Shuddhi implementation in my school, individual and team responsibilities. So session 4 is Sagar Shuddhi, school implementation, individual and team responsibility. It's very small, but like we said, the quality of our work will be very pinpoint, no? We will require a list of those who attended and were trained in these 4 sessions. Okay. Then we can give them a certificate, no?
Captain, do you agree? No, we can give a joint certificate. The certificate can be designed by GBTC. GBTs. Yeah, yeah. You can just put in our Sagar Mitra logo in that. That's all. We Yeah, are we'll knowledge do. partner. We are knowledge partners only. Okay. So list of those who attended and were trained. PowerPoint slides, we will create a slightly smaller PowerPoint. We don't have all the slides in Hindi. We will make Hindi. And the 7 important rules, we will make a small poster of that and send you. And 4 training videos, I think 3 are already available on YouTube. So Raju, this is the education resource, no, which we are going to share with them. Yes. Then now the ball is in the court of GBTC. Finalization of who is going to teach in the first school. Means if there are 5 teachers going to take 5 schools, Raju, we would like this to be for them to monitor it on a WhatsApp where one of us is a member, like you might be a member there. Correct. So, We'll create a WhatsApp group, or use the existing one, yeah, one we where can all the use teachers are yeah, there. we can Yeah. use the existing. And we can regulate. So all of us are in the know-how. Yeah. So this is a list of those who attended and were trained. That should be shared with us. Yeah. Now by end of July, 7 important rules ka poster, 4 training videos we can do. PowerPoint slides give us a little bit more, maybe 15 days, because we'll have to do them in Hindi, the PowerPoint slides. So we will But in the meantime, the existing one we'll send. yeah, existing one they can use, which is the Yeah. English one. And remember, the existing video for the existing PowerPoint for the children is not what we use for these trainings. Some of the slides from there are here. So the children's PowerPoint is particularly for the children. But you will recognize almost all the slides which are given to the children. You give us 15 days for that, I think, for PowerPoint slide. So end of July is now 2 days only. So somewhere we are in, sorry, end of June is in July. By end of July, by 15th of July we'll do it. Not end of July, by 15th of July. Within 15 days, we will have these from our side, we will send you this. Already training videos will go to you anyway, but within this last video of today will go to you in 2 days. 48 hours it requires. Sometimes YouTube doesn't, there's a crowd over there. And 7 important rules ka chota poster banayenge hum, just a text poster. You can create from it whatever you want. And issue of PowerPoint slides, give us 10 to 15 days to think completely about this. Finalization of who is going to teach in the first school. After first completing at least 3 months of field work in each school. Suppose you take 3 schools, 10 schools, I don't know. That is up to you, Now that is your administrative area. Then there will be many questions which come up. On a weekly basis, we are available every Tuesday. That link will be that link will be placed on your WhatsApp group. So any one of you can come on any Tuesday, 8:30 to 10 and ask any question. Our session is to answer your questions. We are there to answer your questions. Okay. After first completing at least 3 months of fieldwork in each school, phase 2 sessions will be notified. Now, what is a phase 2 session? If you have any difficulty in implementing and you come on Tuesday, that is phase 2 going on already. It is learning to course correct while you are doing the work. But after 3 months, you will have sufficient experience that you may have a consolidated set of questions. So we have anticipated that. Nodal Officer for District City Supervision of the Sagar Mitra Sagar Gram Initiative Abhiyan. The coordinator from our end between GBTC and Sagar Mitra Abhiyan Pune headquarters is Captain Ulas Bodan. I will need his consent, so I just gave it here. Raju, I think that's your what you have you have also agreed on. Yeah. No issues. I think I'll be in touch with Soumitra ji, and we'll decide who will coordinate from GBTC side. Yeah. Now a time will come when we have enough schools that we have something to show to the solid waste management department of let us say city governance. It is at that time that we have to look for nodal officer for the city and so on. That is future also. So some future things also we have given. Core team including civil society organization. So who are the 2 or 3 people from their side, GBTC side? So that we have to know. Okay. Yeah. Now GBTC may work in Kathmandu, so 2 people from there. GBTC may work with Ayodhya, so 2 people from there.
But for us, it's enough to have 2 people from GBTC, the core group. Overall. We will be at core group level. For all the other places where we start, they will undergo this training, no? 4 sessions. So the core team becomes civil society organization, NGO representatives, GBTC and other organizations, including Ayodhya schools and colleges, no? When we say NGO, every school is with a trust only, no? That is a non-government organization usually. Government schools and non-government schools also. And I remember Samitra ji had said that in the recycling or the handling of the plastic, some NGO is involved. So such NGOs also we will get to know, I think, as we work together. See, now it is on the field, all of it. As we work together, we will get to know how to shake our hands and come together and sit together and work together. We'll get to know the key people who take responsibility. Mapping and identification of first urban schools and first rural school where implementation begins. As we go towards the end of the 3rd month, we will take a map of the city and try to put the dots on it. Even if it is one school, it is enough. Please remember, in Sagar Mitra, when we started, 2011, we did only one school in 1 year. Because we wanted to know every child and their parents to know, are there any difficulties in doing this? So we did an administrative smart thing. We sorted out all our issues with parents and children in one school, Vidya Bhavan of Hadapsar. Now this is future. Identification of first 5 villages in district. Monitoring of a ZP map, keeping school village record. This is for the future. We should keep some future things because our domain, when it becomes saturated with our work, we should know the next domain which is going to open up. So where are we now? WhatsApp group required to get our feedback from schools. Villages is the future from schools. Our team can call Zoom meet for this as and when needed. Minimum per month between 2-3 people from our side and 2-3 from their side, Raju. We are not calling everybody every month. Just our key people, even a phone call will do. Okay. Then networking through Ayodhya Kathmandu Sagar Mitra Abhiyan WhatsApp group for schools and village members. So we'll keep a network open for Ayodhya, Kathmandu and all the other places. So eventually, nodal officer is basically Captain Bodhankar between us. Then the core team will be there, Sagar Mitra team, recyclers. Recyclers also will get involved in the dialogue. Eventually, government officers get involved in the dialogue. So we have to plan for the future, not just now. This is just an agenda. This is how it's going to grow. Better to anticipate the map. If we are going from Pune to Delhi, then we should have the whole map before us. We can negotiate one at a time. 1. Question and answer meetings in August, September for implementing Sagar Mitra in a few schools. We are assuming that somewhere we are in June. No? July, August, September is the 3 months will be complete. While you are completing those 3 months, you may have some questions on Tuesdays you can ask us. And after September is over, initial questions, we can have a proper session of all the teachers to say, what is your experience and where are we going? If only 3 schools are going on and 6 teachers are there, it's wonderful. We will have a meeting with those 6 teachers. We are not about numbers. We are about यथाशक्ति कार्य करना है, पर योग शास्त्र के फाइननेस से करना है, रिफाइनमेंट से करना है. GBTC field planning independent of Sagar Mitra. We don't know, where you're spread. You might decide some other country also, but that is up to you. Your field planning. Meetings with your core team, GBTC associated main teachers and Sagar Mitra nodal representatives. It's a little repeat of what went on earlier. Then we can say we will involve students who are very intelligent or NSS or NCC or like the group of 60. Up to us. I heard from captain and one of the teachers that 2-3 of the young boys and girls might want to get involved and want to learn how to give the talk also. So much welcome, involving college students or highly trained school students also. We will trust your judgment. Tab between GBTC initiated Sagar Mitra schools and recyclers. Now this is outside our administrative domain. We will work this out, okay? Because wherever we have gone, we have worked it out with the local people who are implementers, how to do this. Far into the future, how to involve all NGOs, all housing societies, all villages, all Mahila Bachat Gat and so on. It's far into the future. There's an incentive system we have to think of. It may take 2-3 years to create this. Can we give marks to the child for bringing waste plastic in Sagar Mitra bag? Or can we give them a medal? Or can we give them some certificate? So certificate is extremely important to children. This is one of the documents we use to
document what happens in one school. We will be sending this document to you. The upper area, now this is a Jalgaon document. See, this is not even a Pune document, right? Coordinated and implemented by Sankalp Foundation, Samner. Supported by Jalgaon Municipal Corporation and Indian Red Cross Society, Jalgaon. The recycling partner is Biani Polymers. Cummins India Foundation supported Sagar Mitra. Model of Sagar Mitra got created and support. So different details are there. Sagar Mitra, this is Jalgaon. Pune, see, while Pune is written, concept and design is Academic Advisors Pune. Academic Advisors is our main organization and Jal Biradari is our implementing organization. Academic Advisors is the creating organization. So you will find Jalgaon Red Cross, Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon NGO over here. On top there is a Sagar Mitra logo and below that is the Jalgaon NGO which does the work. So we give a proper representation, equitable representation to the people who are doing the work. And the primary work will be by the NGO which says we will implement it. Name of the school, principal's name and contact, 2 teachers from the school, their names and contact numbers and emails and so on. And as we see the children over 3 months, we will name one boy and one girl as the Sagar Mitra captain in that class. So Sagar Mitra captains, either 1 student or 2 students boys and 2 students girls. Also indicate which division they are from. Number of divisions and students per division in the school. So 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Number of divisions, total number of students in all the divisions. We will need this data. Not us, GBTC will need. We don't need the data. We are not supervisors over it. We are only here to be friends with the world and share what we find is a very nice thing. You can stay in touch with us. We would love to stay in touch with you. Because I think some of the master planners for North India will come from GBTC. I can write it down right now on Pathar Pe Lakir. Some of the master planners of Sagar Mitra for North India, that means well nigh Southeast Asia, will come from GBTC is what I'm confident of. Then the last part is recollection of waste plastic. January to December is written here 2025, 2026. So every month how much was collected, the date and the weight of that. So the moment we say weight, then the question comes weighing machine. So you see these are the implementation areas which come in. Initially for 3 months you need not go after this. But yes, this will come in because nationally, internationally, when we place this on a website, there are questions asked about the quantification of what you are doing. So we can, because we have been weighing this, when our Pune driver of the van, we introduce him as he is a driver who has transported 1,000 tons of waste plastic. So even the driver stands tall, you know. So I remember we had gone to a company with Captain Bodankar and a German team was there who were their international CSR partners. And we introduced the person who drives our van as the one driver in Pune who has transported children's plastic 1,000 tons. It is 1 million kg. So anyway, we have to keep a record. So we will give you the format on which we design our work. This can be kept on paper or it can be kept online also. Now all our officers are keeping this online. They are not using paper now. There is a register in which it is entered, but this paper is not used. It has gone into now what is called as an Excel sheet. But before creating the Excel sheet, the logic of documentation must be clear. Every Tuesday, 8:30 p.m., Sagar Mitra hosts. We are continuously there with people outside Maharashtra for 4 years now. For Maharashtra, we are there for more than 7 years. Sagar Mitra Fellowship is there on Zoom. So you can come there for Samvad Satatya. I think some of our sessions we took on Tuesday, na Raju? Those which got postponed from Sunday. So that session. Session 3 was on Tuesday. Yeah. And here I have taken the freedom to write Kathmandu. The plastic kachra ka vargikaran, that is plastic kachra segregation will happen. If we have teachers there, we will do it in a few schools. Eventually it goes up to Jilla Parishad and City Parishad and the Gram Panchayats and then the Bachat Ghats and the Ghar Sankuls, every family. Then the NGOs and the Swayam Sevak Samsthas, voluntary organizations. And the schools. It starts from the school and then spreads. So we should have our full journey before us. Doesn't matter if it takes 5 years. Sometimes the government doesn't listen. Our state government has started listening to what we are saying after 16 years. Okay. We have had a long innings.
A reminder, but the pledges for now Nepal. We, the people of each family of Kathmandu, pledge to segregate our family waste plastic at home and to send it for recycling, to protect the Bagmati River and basin, and to protect the ocean forests. Never, never forget the ocean. After you complete your 3 months, there will be an informal session, question and answer session to guide the field work. And after that, we know that there is a standard set of things which comes. Sagar Sadhana is a session which is taken, documentation and networking. We will hear your experience also. Your experience may be better than us by that time. So Sagar Sadhana, Sagar Mitra, documentation and networking, Sagar Sanghatan. We are only in school. Now, how do we go deeply into family, parents, housing society? This is not taught by us. We hear you and we see where you are and we talk about further. Okay. Or you can see where we are and you can suggest to us what more to do. You may find a better way of recycling and please share with us. Okay. Then Sagar Mitra Abhiyan serve the inner and outer syllabus that nature is teaching. So what is inner outer syllabus I am going to go into and we will complete now. The inner syllabus is this. Eventually we learn this syllabus. वही बदलाव बनो जो प्रकृति देखना चाहती है, वही परिवर्तन लाओ जो उत्क्रांति सिखाती है। वही बदलाव बनो जो प्रकृति देखना चाहती है, वही परिवर्तन लाओ जो उत्क्रांति सिखाती है। Now, the word Utkranti, the first reference to this is be the change that you want to see. Is from Mahatma Gandhi. We take inspiration from that. But if by you is meant what humans want to see, humans are not even seeing the ocean, no? So if you ask a human what is the change you want to see, the human being will say, I want to see all the forests on the land are saved. He doesn't even know what to see. So we have to ask nature. Be the change that nature wants to see. What does this mean? And be the change that inner evolution teaches. उत्क्रांति सिखाती. उत्क्रांति क्या है? तो ये आगे के जो सेशंस मैंने आपको बताया ना, जिसका जिक्र मैंने किया, सागर मित्र अभियान जो आखिरी सेशन होता है हमारा, इनर एंड आउटर सिलेबस। मैं इनर आउटर सिलेबस की एडवांस बात कर रहा हूं। देखो यहाँ आपको दिख रहा है सागर मित्र और एवोल्यूशन का संबंध है। तो ये 1 मिलियन बीसी में आदिमानव पर्व शुरू हुआ जो 32,000 बीसी तक चला, फिर मानव बना, मानव पर्व चला 32,000 बीसी टू 2000 एडी। 2000 एडी मीन्स जस्ट 26 ईयर्स अगो। और ये अभी एमर्जिंग ग्लोबल आइडेंटिटी है। सागर मित्र इज मेड टू चेंज एमर्जिंग ग्लोबल आइडेंटिटी इनटू द कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल आइडेंटिटी, जिसको उत्क्रांति कहते हैं। तो ये उत्क्रांति का पोस्टर नहीं, ये गाना है। जपो जपो मन मंत्र जपो, विश्व मानव का पथ अपने भीतर रचो। जपो जपो मन मंत्र जपो, उत्क्रांति की याद को प्रेम से सजो। जपो जपो मन मंत्र जपो, उत्क्रांति की ओर प्रेम से सजो। The details of how Sagar Mitra is preparing the children to change from regional and national identity to the emerging global identity because of the ocean, and from emerging global identity to the cosmic identity, which is because of the largest ocean, which is the ocean of the universal energy, because the call is from universal energy. ये हमारा कॉल नहीं है। और ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी जो बनेगा उसके भीतर के सारे सागर जो है वो पूरी तरह से रचनात्मक हो जाते हैं। तो इसमें दिया है उत्क्रांति की ओर खुद को रचो, उत्क्रांति का रास्ता बनाओ। मैं
फिर से मैं लगाऊंगा, इसको सुनो। उत्क्रांति का जो रास्ता है वो हमने बनाना है। इस रास्ते का नक्शा अभी नहीं है, पर ये रास्ता सही है। हम और आप चलेंगे वैसे नक्शा बनेगा। हम और आप चलेंगे वैसे नक्शा बनेगा। इसमें सुनो, ये दिया है। जपो जपो मन मंत्र जपो, विश्व मानव का पथ अपने भीतर रचो। विश्व मानव का पथ अपने भीतर रचो। कोई बाहर से नहीं सिखा रहा है, भीतर से देखना है टटोल के। आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड द सॉन्ग। जपो जपो मन मंत्र जपो, विश्व मानव का पथ अपने भीतर रचो। जपो जपो मन मंत्र जपो, उत्क्रांति की याद को प्रेम से सजो। जपो जपो मन मंत्र जपो, उत्क्रांति की ओर प्रेम से सजो। If you study this, it is head, heart and hands. I won't go into that. So जब हम ये कहते हैं, हम एक बार ये सुनेंगे पहला सिर्फ 2 लाइन्स। वही बदलाव बनो जो प्रकृति देखना चाहती है, वही परिवर्तन लाओ जो उत्क्रांति सिखाती है। ये उत्क्रांति, ये परिवर्तन सिखाती है। सो आगे आगे जाके फ्रॉम अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चेंजिंग चिल्ड्रन टू सागर मित्र, दिस गोज इनटू एक्सट्रीम डिटेल्स ऑफ हाउ अवघ्या चत्वार मुक्ति यानी समीपता, स्वरूपता और सायुज्यता तक चला जाता है। तो दिस इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम एंड चिल्ड्रन गेट टू नो कि अखंड देश हमारा यहाँ बताया है। ब्राउन कलर और ब्लू कलर मिलके अखंड देश है हमारा, भूखंड और जलखंड। भारत का भूखंड और भारत का जलखंड यानी समुंदर। तो ये बात बनेगी और ये सारे देशों तक जाएगी। सारे देश खड़े हो गए हाथों में हाथ मिला के, और सागर को हरियाली के जैसे देखेंगे। जमीन की हरियाली भी देखेंगे, सागर की भी हरियाली देखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुंधरा हमारा कुटुंब है। तो द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी आर हेडिंग फॉर दैट। अहिंसा परमो धर्म, अल्टीमेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉन वायलेंस। द चिल्ड्रन आर लर्निंग दैट. Global friendship is easy if, as Sagar Mitra, we all fall in love with our oceans. Then we will evolve up to the cosmic citizen. Be the change that nature wants to see. 28/6/2026, we have completed session 4 Sagar Shukti. तो मेरी प्रार्थना है और मुझे 5-6 मिनट देना। मैं कोई चित्र मैं बताऊंगा आपको। अपना सेशन हो गया। तो एक चित्र है, हम महाराष्ट्र में से स्वराज्य को ऐसे देखते हैं। शिवाजी महाराज ने यह स्वराज्य बनाया। जो ऑपरेशन चल रहा था प्रजा का, वो प्रजा को मुक्त कर दिया। और ये दूसरा है स्वराज्य, जहां ये सारे लोग हमें चेहरे दिख रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश का जो हमारे ऊपर राज्य था, वो ब्रिटिश भी प्रजा को बड़ी तकलीफ दे रहे थे। तो प्रजा को बचाने के लिए होता है। इसमें आर्मी तैयार करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी भी थे और नॉन वायलेंस वाले गांधी जी भी थे। ये सारे समाज में आ गए, खुद का पूरा एजेंडा भूल के ये सारे समाज में आ गए कि एक ही एजेंडा है, क्विट इंडिया बनाना है, यानी ब्रिटिश को निकालना है। बट द पर्पज वाज टू सेव द वीकर पीपल। नाउ द थर्ड स्वराज्य इज देयर, वेयर वी विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ इनसाइड अस, वी विल रिड्यूस द वीकनेसेस इनसाइड अस। ये हिंदी में बना रहे हैं अभी हम। और ये सारे बच्चे मिलके सारे पृथ्वी को देखेंगे। ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र और भारत देख रहे, ऐसे नहीं कि बंगाल और भारत देख रहे, ऐसे नहीं कि पंजाब और भारत देख रहे, केरल और भारत देख रहे, कश्मीर और भारत देख रहे, ऐसे नहीं। ये सारे मिलके कौन सी प्रजा को बचाएंगे? तो जो बेजुबान प्रजा है, जो मानव नहीं है, ऐसी जो प्रजा है, पंछी, मछली और वनस्पति, इनको बचाएंगे भाई। तीसरा स्वराज्य तो ये है। मानव बन गए हैं कॉलोनियल,
We have become the parasites. We have become the Mughal and the British on these creatures. And Sagar Mitra is the lesson of this level of तीसरा स्वराज्य. उनकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग. उनके भीतर एक्टिविज्म का पेड़ अपने आप आ जाएगा. उनका ग्राउंड लेवल का हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि टेक अ लुक एट द होल मैप. यू कैन नॉट नाउ लुक एट द मैप ऑफ अ नेशन. You must look at the map of the planet. And as you know, we also talk about all the three oceans. I'm not repeating it. Because of the word Sagar, they connect with the Kshira Sagar, which is the Ananta Sagar, Karuna Sagar, or Khare Pani Ka Sagar. This is what Third Swarajya, we have a document which was a declaration of Third Swarajya in 2008. And what should be the children's program for this? So it took us 4 years to create this program. 3-4 years. 2008, 9, 10 and 11. 2011 we started the Sagar Mitra program as the children's training for Tisra Swarajya. So Tisra Swarajya is stop the misuse of science and increase the good use of science. If you see the poster. It also says find that all the prayers of all the religions are the same prayer, same word, same 7 chakras. So जब हेड का काम करते हैं तो साइंस में रिफॉर्म आता है. हार्ट का काम करते हैं तो ऑल द रिलीजन्स विल फ्लो इनटू वन. दिस इज गोइंग टू हैपन. करुणा ये रिलीजन है, प्रेम ये रिलीजन. All the children will hug all these signs and they will be able to say at least three types of prayers of 3 religions. Because the prayer is the same prayer. That is also our higher advanced training. How the meaning of the Christian prayer, the Islamic prayer and the Indian prayer is the same. The Buddhist prayer, it's the same meaning. Then Jain prayer, same meaning. Zoroastrian prayer, Parsi prayer, same meaning. Same 7 chakras. This is the administrative work that we have to stop seeing the world as divided into nations, but as one place where we are divided into families only. Our basic unit is the family, that's all. And if we change the high school student, he changes the family. If you change all the high school students, all the families on the planet get changed. So this is what we are heading for, liberating our home earth. स्वराज्य तो पृथ्वी का है अभी. हमारे डिवीजन में से उसको बचाना है. तो इसको हम कहते हैं सर्वाग्रह. शुरुआत में जो लगाया था, सब देशों का आग्रह होगा, सब राज्यों का आग्रह होगा, सब डिस्ट्रिक्ट्स का होगा, तालुका का होगा, हर स्कूल का होगा, हर बच्चे का घर में होगा. चलो जगाए सब छात्रों को राज्य राष्ट्र और शहर उठो. शहर गांव और घर घर में अब सब परिवारों जाग उठो. सागर मित्रों के जल रक्षण की क्रांति का वचन सुनो. प्रदूषणकारी हाथ रोक कर जल रक्षण का कवच बुनो. सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह समृद्ध बनो. हर एक हाथ की मदद चाहिए, 100% सहयोग चाहिए. शत संकल्प से सिद्ध बनो, 100% कृतिबद्ध बनो. सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह का मार्ग चुनो. एक भी मानव आत्मशिस्त से हटे नहीं, संसिद्ध बनो. सत्याग्रह के परे उभर कर सर्वाग्रह समृद्ध बनो. Be a global cooling volunteer. Thank you.
We are complete for the day. Thank you so much. So this is about Sagar Shuddhi. I'm so glad that we could create these songs in time for GBTC. These are recently made songs. पहले ये गाने हुआ नहीं करते थे. ये पिछले 3 महीने में बने हैं. We're so glad that we could share them with you. Thank you so much. नीलम जी ने लिखा है all songs are melodious and heart touching lines are included. Thank you so much for appreciating. I can imagine how many teachers are there who could be moved in India by this, because we are in a internet age, no? Such things can eventually, they will become viral. We are not going to push for it. धीरे धीरे हमें समझ में भी नहीं आएगा, टिपिंग पॉइंट आके ये सारे सुनना शुरू कर देंगे. These are not just songs. They are like the genetic RNA and DNA by which the new protein synthesis is happening. How are the human beings going to hold hands? Only in India with Indians? Or we will hold hands across the borders? Will Christians hold hands only with Christians? No, we are going to be across all borders. And our children are going to be the magnificent peace warriors in this. Magnificent. So, आप चेक करते हैं किसी को अगर कुछ कहना है. तो मेरी बात होगी. बोलिए संतोष कुमार. सर, आप सभी को प्रणाम. वास्तव में आप लोगों को सुनना और इस प्रोजेक्ट को समझना, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है कि एक महायज्ञ टाइप का है. क्योंकि जैसा कि आज के हर सेशन में आप कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो मन और मस्तिष्क को झंझोड़ देती हैं कि वास्तव में मनुष्य की वैल्यूज क्या हैं, मूल वैल्यूज क्या हैं. जैसे कि आज आपने जो सागर मित्र को क्षीर सागर से जोड़ा. मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस स्थान पे रहता हूँ, इस स्थान के थोड़े से बगल में, मतलब हार्डली 500 किलोमीटर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मस्थली राम जन्मभूमि है. और राम जन्मभूमि के ठीक फ्रंट पे अभी तो वहां सर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐतिहासिक रूप से सुना है उसको कहते हैं क्षीर सागर. जी. तो एक बार मेरे पास अमेरिका से फोन भी आया था रिगार्डिंग कि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का महत्व तो सर हम लोग तो इतना नहीं जानते, लेकिन बगल में ही एक मंदिर है जिसका नाम है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर. तो उस मंदिर की हिस्ट्री भी लिखी हुई है. फिलहाल वो तो मैथोलॉजिकल पार्ट है. हमारा पार्ट तो ये था जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि वास्तव में क्षीर सागर मीन्स पवित्रता, मीन्स शांति, मीन्स दिव्यता. ये सारे गुण हमें, पवित्रता का गुण, शांति का गुण, दिव्यता का गुण, वास्तव में हमें क्षीर सागर दे रहा है. माने एक असीम उदारता, धैर्य, संयम, करुणा, सेवा, पवित्रता, सहिष्णुता, सभी को धारण, सभी धर्मों के को धारण करना, परोपकार, कल्याण, धन, मर्यादा. तो कहीं ना कहीं हम जब सागर मित्र से जुड़ते हैं, तो हम जब समुद्र संरक्षण की बात करते हैं, तब हम करुणा सागर की भावनाओं को अपने जीवन की प्रेरणाओं में उतारने का प्रयास कर रहे हैं. कि कक्षा 5 की एक कविता है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है. तो उसमें सर एक लाइन है, एक लाइन ये है कि प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर तेरी तरंग माला. तो ये सर मतलब कहने का मतलब है ईश्वर की दया जो है, ईश्वर की दया को तो तरंग मालाओं के इसमें देखा जा सकता है. तो कहीं ना कहीं जब हम समुद्री जीवों पर अत्याचार, हम तो कहेंगे अत्याचार कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीव को खतरे में डाल रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक विशाल भंडार जो जीवों का है, कहीं ना कहीं उनके प्रति हमें अहिंसा भाव रखना और उनको जीवित रखना हमारा कर्तव्य बनता है. तो आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने हमें जो है हिंसा करने से बचाया और इस अभियान में जोड़ने का प्रयास किया. और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हमें लगातार प्रयासरत रहना, हमें भी मालूम है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हमें जागरण करते रहना है और खुद को जागृत करना सबसे आवश्यक है.
खुद को जागृत करना। तो वो कहते हैं ना, खुद हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो समुद्र को प्लास्टिक मुक्त रखना ये केवल हमारा एक अभियान नहीं है, बल्कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़ा अधिक बोलता हूँ, लेकिन क्या करूं कि झंझोड़ देती हैं कुछ बातें, तो सुनने को मन करता है। अक्सर ईश्वर के लिए सब कुछ अर्पण करने को मन करता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बातों से, आपके शब्दों से हमारी ताकत बढ़ती है। बहुत 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 धन्यवाद। और कोई बात करें? Sir, thank you so much. My voice is audible, sir? Yes, absolutely clear. Yeah. सर, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर इतने अच्छे सेशन के लिए। और दूसरा, सागर मित्र से कनेक्ट होकर मुझे इतनी अच्छी फीलिंग ये आ रही है कि जैसे पेरेंट्स से हम लोग संस्कार पाते हैं, पेरेंट्स से हम लोग जो भी नॉलेज पाते हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक उसी तरह से मुझे इस सेशन में एक फीलिंग आ रही थी। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी एंड पापा जो है, जैसे हमारे यहाँ सरयू रिवर है, गुप्तार घाट है, तो वहाँ पे पापा स्विमिंग सिखाने के लिए जाते थे। तो सर मुझे बहुत डर लगता है पानी से, जो फैक्ट है कि मुझे बहुत डर लगता है। बट आज जो सेशन मैंने ये अटेंड किए हैं, मुझे लगता है कि मैं उस नदी में ठीक से, ऐसा नहीं है कि स्विमिंग से रिलेटेड मैं वो बोल रही हूँ कि मुझे उतर के जाना, हाँ, बट कनेक्ट होने की इच्छा कर रही है, एक अलग से भाव जागृत हो रहे हैं। और अपनी लाइफ में जितना हो सका है सर, मैंने दूसरी संस्थाओं से कनेक्ट होकर नदियों के प्रति जो स्वच्छता अभियान अभी रविंदर मैम भी बता रही थी, उसमें हम लोग ESF से कनेक्ट होकर किए हैं। ठीक उसी तरह से इन सेशंस के थ्रू हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो हम लोग चाहेंगे कि अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के जो भी लोग रहते हैं उसमें अवेयरनेस डाल सकें। और अवेयरनेस क्रिएट करने की हर कोई कर भी रहा है, बट एक होता ना कि ठीक से वो इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पा रहा है। तो होप सो इन सारे सेशंस के थ्रू और आगे कनेक्टिविटी के थ्रू हम सब जो है इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर पाएं। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, बोलिए बोलिए। मैं अनामिका मिश्रा। सर, थर्ड सेशन ना अटेंड कर पाने का दुख है, क्योंकि संडे को मैं वेट करती रही, नहीं हुआ हमारे योग दिवस के कारण, और मंगलवार को मैं हनुमान जी के भंडारे में व्यस्त रह गई। तो वो सेशन सर, यूट्यूब वाला लिंक भी नहीं आया है ग्रुप में। मैंने रखा है, कल रखा है ग्रुप में। कैप्टन आ गया कल लगा अभी जो, हाँ, जहाँ में हमने लिंक दी है ना आज के प्रोग्राम के, उसी के ऊपर है। आप देख लें, उसी के उसको देख ठीक है लीजिए। सर, मैं तो आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो कवर हो जाता है। फिर से हम लोग चारों एक साथ डाल देंगे। हाँ, ठीक है वो सर, पूरा थैंक यू वेरी सेट मच। भी हम रखेंगे। यस। और सर, आज बहुत अच्छा लगा कि सत्याग्रह नहीं सर्वाग्रह वाली बात बहुत ही अच्छी है। और सर्वाग्रह होगा तभी कुछ चेंज आएगा। और फिलहाल हम लोग सत्याग्रह आज इस बात का प्रण लेते हैं कि अपने जीवन में तो भाई अब प्लास्टिक को यूं ही नहीं फेंकेंगे डस्टबिन में। जितनी भी प्लास्टिक हम अपने जीवन में यूज करेंगे, उसको प्रयास करेंगे कि रिसाइकलिंग के लिए। मैंने अभी सर्च भी किया कि हमारे अयोध्या में भी रिसाइकलिंग के बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं काम। तो अब हम लोग इसको किसी के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हम लोग जान पाए कि कहाँ कैसे उनसे हम कांटेक्ट करके। और म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन भी हमारा एक कबाड़ी वाला के उससे नाम से उसमें भी चल रहा है काम हमारे यहाँ। मैंने अभी भी गूगल पे ही सर्च किया सर अयोध्या में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस अवेयरनेस के लिए सर। हम लोग आगे आपके साथ जुड़कर आशा है कि अपने बच्चों को भी सागर मित्र बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। सागर मित्र का नाम लिया तो सागर मित्र, जैसे हम अपने दोस्त के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, हम उसकी हर उससे अच्छी बातें और बुरी बातों के लिए उसको रोकते हैं, वैसे ही अगर हम बच्चों को इसका अर्थ बताएं कि आपको दोस्ती करनी है नदियों से, सागर से, तो हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं। बिकॉज सर, मैं आपको फर्स्ट डे से बता रही हूँ, भैया प्री प्राइमरी टीचर्स, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमको उनके लेवल तक जाके चीजों को बताने में भी हम इट्स अ वेरी चैलेंज। लेकिन हम लोग उसको तोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि उस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि हमको
सागर को मित्र कैसे बनाना है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स की उसकी फीलिंग्स के बारे में समझते हैं, दैट वी हैव टू डू विद आवर चिल्ड्रन। तो सही बात है। Thank you so दिस much वे for वी your ओनली, हाँ, and इन दिस वे ओनली वी टेल आवर स्मॉल किड्स की हाउ दे respect, they value these things. बिल्कुल सही। they are open to it. Just wonderful sharing because all of the teachers here represent the teachers of our planet. आपको पता है रशिया में हो, यूक्रेन में हो, इजराइल में हो, जो प्राइमरी स्कूल को सिखाते हैं उनका हृदय एक ही जगह पे है, बच्चों के साथ, बस बाकी कुछ नहीं उनको देखना है। इतना That's good. प्यार है वो बच्चों के बारे में, बिकॉज दे आर द मोस्ट इनोसेंट, नो मोस्ट इनोसेंट, किंडरगार्टन फर्स्ट सेकेंड, व्हेन वी सी देम आल्सो और एनर्जी हम फुल जाते हैं, पूरे खुल जाते हैं। तो योर वॉइस itself connects me to those children here, and I remember this, that how many teachers like this are there, how many Ravinder Kaurs on the planet. All we have to do is make them reach a structured vision of Sagar Mitra. तो वो, Thank you, sir. हाँ, एंड यू आर एक्सपर्ट्स एट हाउ टू ब्रिंग इट टू द चिल्ड्रन। हमारे लिए वो एक्सेस नहीं है, हम उतने छोटे बच्चों को नहीं जानते। Yes, sir. तो योर जनरेशन और योर लेवल ऑफ लेयर ऑफ टीचर्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द प्लैनेट। Please, you are very special. All of you teachers who are teaching the primary schools and pre-primary, you have the, जिसको कहते हैं खेती के पहले बीज डालने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, तो Yes, आपके sir. हाथों में मिट्टी तैयार करने का काम है। Yes, sir. वो Even बहुत, मैंने तो लास्ट सेशन हुआ था तो आई हैड शेयर्ड विद माय एडवाइजर मैम, सौमित सर जानते हैं अंजलि मैम को, तो एक्चुअली आई एम कनेक्टेड विद इंटैक आल्सो। तो इन्होंने ये बोला है कि अंजलि मैम से मेरी बात हुई तो शी टोल्ड कि रविंदर, ये जो आपने जो नैनोमीटर वाली जो बात बोली थी, जो हम लोग रिसाइकिल करते हैं बॉटल को, उसके मैंने बोला कि अगर वो सन के रेस में आएगा तो वो बहुत, जब भी वो होगा बहुत हार्म करेगा हमारे जगह को। तो उन्होंने बोला कि जब भी रविंद्र इंटैक की मीटिंग होगी, यू गो एंड शेयर दिस पॉइंट कि हम उसका सोल्यूशन, जो तुमने उसमें ट्रेनिंग पार्ट में जो तुमने लिया है, दैट यू हैव टू शेयर। तो मैंने बोला डेफिनेटली मैम, आई विल शेयर ऑल द थिंग्स, बिकॉज वी हैव आई थिंक 60 मेंबर्स आर देयर इन इंटैक, कुछ नॉन मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा जब हम सबके सामने वो लेके आएंगे। थैंक यू सो लेकिन मच। also जब हम स्कूल के बियॉन्ड भी वहां चले जाएंगे तो मेरे लिए, और या सौमित सर भी जानते हैं वहां पर, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। बहुत मिस झुंझुनवाला जो है वो इंटैक के साथ जुड़ी है, उनसे और कुछपाल सिंह जी, इनसे मेरी बात हुई है। सो रविंद्र जी आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, बिल्कुल हम कनेक्ट करेंगे अलग से, बट यस, एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद, मच। बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट लीडर कौन है? प्रोजेक्ट लीडर यहाँ पे जीबीटीसी का एक अनुज, भी अटेंड किया अनुज, है, अनुज जी, और किसी को अंबुज कुछ कहना पांडे। है? हाँ, प्रोजेक्ट लीडर। यस सर, अंकुश पांडे सर। कहिए कहिए। हाँ पांडे जी, आप तो लिखा था कि आप अटेंड नहीं करेंगे, तो आप आ गए, वेरी गुड। नहीं नहीं सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था शुरू में। हाँ, that थोड़ा was तकलीफ हो रहा था, करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत बढ़िया आप ज्वाइन कर पाए, तो कुछ कहना है आपको? नो सर, थैंक यू, बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और जो है अर्चना त्रिपाठी जी, पायल पांडे जी, अमन पांडे जी, आपको कुछ कहना है तो कह दें और हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीशन के लिए हम आपको अंग्रेजी में कुछ सुनाएंगे। So shall I go to Captain? Shall I go to a Yeah, song I and think we complete now? can Yeah, we can we complete. can close the session, yeah, Yeah. with the So there song. is a change happening on the planet. We don't have to create the change. वो चेंज की एक बड़ी जैसे कहते हैं ना, सागर को भरती आती है। सागर जब बिकॉज ऑफ द मून देर इज अ टाइड, और वो एक बड़ी लाट, एक बड़ा लहर आ रही है ह्यूमन बींग्स के भीतर से, ऊपर 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 7 चक्रों में से। इसमें से कुछ आगे फेंके जाते हैं तो उनके पास उत्तर आ जाते हैं, पर बाकी के लोग भी प्रश्न लेके चल रहे हैं। तो ये पूरा कारवां प्रश्न और उत्तर लेके चल रहा है। तो प्रश्न वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर वाले उत्तर दे रहे हैं। तो ये कारवां कुछ घटित हो रहा है अभी पृथ्वी पर। इसके बारे में कुछ अंग्रेजी में लिखा है, एक अंग्रेजी कविता है, बहुत बहुत पुरानी कविता है, 1990s की है।
I'll start. The new age has come, one by one, the ones who are called. Unknown to themselves, thinking, work, and speaking act in complementary patterns. Thread by thread upon the loom is threaded, weaves into the silent strength that gathers. Unseen millions join, gentle links, subtle links, forging gentle souls together. Selves transform together, and in isolation deep and firm these roots take root, reaching for God, for each other, to give and take and share and grow, to flow into a wholesomeness where memories of baser times just fade. Come, ye repairs of the breach, restore the paths long forgotten. Just walk on them. There is a change happening. जैसे संतोष कुमार जी ने कहा कि पुराने जो रास्ते हैं हमारे, उस पर चलना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, पुराने रास्तों पर चलना है, तो वो रास्ते बन जाएंगे अपने आप। हम भूल गए थोड़ी देर के लिए कि हमारी करुणा विश्व तक जानी चाहिए, समंदर तक जानी चाहिए। नमस्कार, ये प्रार्थना हो गई ऐसे मैं समझता हूँ, अंग्रेजी में हो गया। चलो, अलख निरंजन, नमस्कार। We'll close. Raju, we will follow up about whatever we said. Oh, that definitely I'll touch base with Soumitra ji, Santosh ji, Pandey ji, and we will take this forward. Ravinder Kaur ji hai, Thank you, Aman Pandey Neelam ji. ji hai, we'll do that. Thank you so much. Namaste. Thank you all. Thank you, all of you. Thank you. Bye-bye.